Hello everyone. So today we are going to discuss about the polymorphism. So polymorphism is like a method behavior can be changed depend on the object, or we can say the object and method behavior behave differently based on the context. So there are two way to implement the polymorphism. So one is a method overloading and second one is a method overriding. तो पहले हम मेथड ओवरलोडिंग देखते हैं. सो मेथड ओवरलोडिंग जो पॉलीमॉर्फिज्म है इसको हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं. ओके. So for method overloading polymorphism, in a same class we have a multiple method with the same name, but the argument type are different. So for that let me create one class so we can understand with the example. And let me copy the same method so we can save some time. So in a same class I have created two method. Okay. And like two method, and both method having a same name but different argument type. So let me call those method from the class. So for that I have to create an object for that class. So I am calling the method, and at line number 11 you can see I am passing the integer, and at line number 12 I am passing the float. Okay. So let's see the output. ये देखो, अगर हम इंटीजर पास कर रहे हैं तो ये वाला मेथड कॉल हो रहा है, अगर हम फ्लोट पास कर रहे हैं तो ये वाला मेथड कॉल हो रहा है. मतलब ये जो मेथड कौन सा कॉल होने वाला है, ये मेथड का बिहेवियर डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट. ओके. आर द वैल्यू वी आर पासिंग इनसाइड द मेथड. सो दैट इज एग्जांपल ऑफ मेथड ओवरलोडिंग. अब हम मेथड ओवरराइडिंग देखते हैं. सो फॉर दैट लेट मी कमेंट, लेट मी रिमूव दैट कोड. लेट मी कमेंट. ओके. सो फॉर for method overriding, so in a method overriding we have to create a one parent class, and we have to create a child class, and child class can change the behavior of the parent class. Okay. So for that I am creating one class which is a payment. Mm, and in that I am creating a one method public void payment. And so let me copy the payment class and paste that, and create a new class like a credit card payment, and payment credit card payment connection the payment class. Okay. And over here we can pass cc, and that payment method is a overridden, so we can use that override annotation uh, for the payment method in a credit card payment. So that is not mandatory, but we can use for safer side. And in a similar way I am creating a one more class for UPI transaction. Okay. UPI payment. Okay. So far I have created a three class. One is a payment class, and that is a parent class, and I have created one class for a credit card payment, and that is extending the payment method for my parent. Okay. And one for UPI transaction.
So I have created a object for payment. A similar way, let me create a one for UPI. Okay. Okay. Now I have created the UPI must be in capital. Okay. Now let me call the payment method on credit card. Okay. And same for UPI. And let me run the program and see the output. तो ये देखो, अगर जो पेमेंट का रेफरेंस में अगर क्रेडिट कार्ड का ऑब्जेक्ट होता है तो दैट इज़ कॉलिंग अ पेमेंट मेथड। ओके। और अगर जैसे कि पेमेंट के रेफरेंस में यूपीआई का ऑब्जेक्ट होता है तो दैट इज़ कॉलिंग अ यूपीआई मेथड। और इसको हम क्या बोलते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। सो लेट मी प्रूव दैट। सो अभी क्या होता है, हम अभी अगर ये पेरेंट्स का मेथड है, इसको अगर मैं रीनेम करता हूँ तो ठीक है, मुझे कंपाइल टाइम एरर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एट कंपाइल टाइम वी आर चेकिंग द मेथड इन अ पेमेंट मेथड। ओके, बट एट रन टाइम वी आर कॉलिंग द क्रेडिट कार्ड मेथड। I so I think you understood. So okay, that is it for today, and thank you for watching the video.